Hey guys, welcome back. You are watching Organization Theory Lectures and the topic for today is project structure. This structure came up because of some faults in the previous structures. We all know that there is a reason behind everything, so we always start with why. Why do we need a structure called project structure? Actually, there was problem with the functional structure because it was not suitable for unique customer specific demands. आपको पता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में पूरा डिविजन ऑफ वर्क वाज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड उसकी वजह से अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोजेक्ट आता है, कोई यूनिक कॉन्ट्रैक्ट आता है या फिर यूनिक कस्टमर डिमांड होती है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ऑन ऑल द फंक्शंस. Like it is very difficult to check the progress in all the functions. So we came up with a structure called project structure that will fulfill our demand in this case. So here in this project structure we build a resource team. A resource team is under resource team. A resource team is built. कहाँ से build करते हैं? From the functional pool. We actually take resources, we take personnel from different functions and we unite them or group them into one team called project structure resource team, and it is under the guidance of a project manager, a manager that will guide that team. In this case, external specialist may also be added. Now, some flexibility is being provided in this particular structure. और जैसे ही task complete होगा, team will be dismantled and the functional members can move back to their respective home departments. तो इसमें ये क्या हो रहा है? You are making optimum utilization of the human resource. So whenever you need some people in your project, you call them, and when the project is completed, they return back to their home departments. So this is particularly beneficial for the modern organization which requires flexibility. So this is what is project structure. See, where earmarked teams are created for each project. Focused project. हम हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक earmarked टीम बना रहे हैं which organization may be handling. अब प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्ट मतलब होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई नई प्रोडक्ट लाइन हुई, कोई नया असाइनमेंट हुआ है जो ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है, और ऐसा चीज जिसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड फोकस चाहिए और अटेंशन चाहिए. और स्पेशलाइज्ड फोकस और अटेंशन कौन देगा? प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसके अंडर एक टीम है जो हमने डिफरेंट फंक्शन से ली है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. Let us see how this is working. We have a functional structure, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ, CEO हुआ, ये लाइन अथॉरिटी हो गई, ये हमारी स्टाफ अथॉरिटी हो गई, ये आ गया सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे स्पेशलिस्ट आ गए. ये हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है प्रॉपर. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, कोई नई प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आई है, तो उस प्रोजेक्ट में हमको जिस फंक्शन से जो पर्सन चाहिए, लाइक वी नीड प्रोडक्शन पीपल, वी नीड फिनेंस पीपल, वी नीड परचेजिंग पीपल, तो हम उन पर्टिकुलर फंक्शन से वो पर्टिकुलर पर्सनल ले लेंगे. वो रिसोर्सेज हमने पूल कर लिए उस प्रोजेक्ट के लिए. नाउ ऑल दोज पीपल और पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स विल बी डिवोटेड टू दिस प्रोजेक्ट. जो यहाँ से निकाला गया है उन्हें अब अपने फंक्शनल हेड से मतलब नहीं है, वो सबके सब इसी प्रोजेक्ट पे लगे रहेंगे. तो फिर एक ये प्रोजेक्ट टीम बन जाएगी जिसे हम रिसोर्स टीम कह रहे हैं, विच विल बी अंडर ए प्रोजेक्ट मैनेजर एंड दे विल बी वर्किंग अंडर दिस प्रोजेक्ट मैनेजर. सो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड है. देखो, देयर आर लाइक डिफरेंट थिंग्स बीइंग सेड बाय डिफरेंट books. Some people say that there is by violation of unity of command की जो ये टीम है उसमें जो members हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में भी है और जो फंक्शनल हेड है उनके अंडर में भी है. लेकिन in some books I found that they say that the whole people who are pulled from these functions will be working under the project manager, so they will not be impacted by the functional head. They will be independent of the functional head. So this was something that I found most relevant and suitable as a project structure. So you may research on it. If you find something else, please mention in the comment box. It is good when you share your knowledge. So this is something that I found suitable. That is, whatever resources or the personnel which are pulled from these particular people, these particular functions will be working under the project manager and they will be independent of their functional heads. Okay. Similarly, जब कोई दूसरा प्रोजेक्ट आएगा तो वो भी उसी तरीके से डिफरेंट फंक्शन से अपने पर्सनल अपनी टीम बिल्ड करेगा और जो टीम होगी इट विल बी कंप्लीटली अंडर द प्रोजेक्ट मैनेजर. और एज सून एज द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, देन दिस पर्टिकुलर टीम विल be disbanded and वो जो भी members हैं वो they'll return back to their home departments. Okay guys, so this is what is project structure.
Okay, so what the project manager is supposed to do? He is responsible for the completion. This is a very important thing कि ये responsible है for all the work that is being done. He decides what, when and how much resources are needed. He will tell them what to do and how to do. He is the unifying agent and he is also responsible to hire external sources. जो भी external sources अगर चाहिए तो वो पूरा उस particular project का करता धरता project manager है. Simple. कब सुटेबल होता है ये? इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क यू कैन इजीली गो थ्रू दैट कि कौन कौन सी चीजों में सुटेबल होता है. बस यू हैव टू थिंक वन थिंग, जो वन टाइम प्रोजेक्ट है, डेफिनेट है, सिंगल है, स्पेसिफिक है, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, अनफैमिलियर है, लार्ज कॉम्प्लेक्स और इट कैन बी हाईली स्टैंडर्डाइज टास्क. लार्ज और कॉम्प्लेक्स हम आगे पढ़ेंगे कि कब ऐसा होता है. तो ये पर्टिकुलर सुटेबल होता है जब हमारे पास एक लार्ज प्रोजेक्ट हो, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, कोई स्पेसिफिक नीड्स हो, उसकी स्टैंडर्डाइज्ड टास्क चाहिए, जैसे इन सब चीज़ों में. तो इन सब चीज़ों में हमें एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हेल्प करेगा. ओके, हम देखेंगे उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड डीमेरिट्स. सबसे ये इजीली हमने अभी तक कितने सारे पॉइंट्स देखे उसमें से हो जाएगा. जैसे ऑप्टिमल यूज ऑफ पर्सनल हो रहा है क्योंकि जैसे हमें पर्सनल चाहिए हम फंक्शन से उठा रहे हैं एंड देन वी आर रिटर्निंग बैक द फंक्शन हेड देयर पर्सनल. एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्यों हुआ? बिकॉज इट इज बिकॉज द पीपल आर एक्चुअली ट्रेन्ड इन डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स. They are being pooled for diversified projects, different projects, new, unfamiliar and complex projects के लिए उनको pool किया जा रहा है. फिर they are working in it, they are gaining experience. So एक executive development. Timely और standardized completion हो रहा है because हमें specialization मिल रहा है. We are actually getting the specialized team. So when we have a specialized team, we have more flexibility in it. तो हम environmental complexities को reduce करेंगे. We are focusing our attention on a particular project and it is a democratic function because हमने डेमोक्रेटिक टीम बनाई है डिफरेंट फंक्शंस में लेके विच इज अंडर अ सिंगल बॉस दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजर. और इट अलाउज अ टू वे कम्युनिकेशन बिकॉज दे हैव the people working under have the freedom to tell their views, they discuss with each other and they come up with the results. अब इसके डीमेरिट्स क्या हो? भाई इतना कुछ अच्छा है, इसमें क्या बुरा है? इसमें बुरा ये है कि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. दे आर जस्ट concentrated on the project. तो यहाँ पे सब यूनिट गोल इंटरनलाइजेशन हो सकता है. एक सिचुएशन आ सकती है when the project goals they take a toll over the organization goals. पर्सनल पे स्ट्रेन होता है बिकॉज दे हैव टू वर्क एट वेरियस प्लेसेस. दे कंटिन्यू फ्रीक्वेंटली दे हैव टू चेंज देयर प्लेसेस. दे फ्रीक्वेंटली दे हैव टू वर्क ऑन डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स. चेंजेस को बहुत ज्यादा उन्हें हैंडल करना पड़ रहा है तो स्ट्रेन हो सकता है. This is the most important point that I find here, that is general commands on specialist. As you all know that the project manager here is a general manager. है ना, वो जनरल मैनेजर जिसका डायनेमिक नॉलेज है, डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम कर रहा है, डाइवर्स चीजों कर रहा है, वो जनरल है. लेकिन उसके अंडर जो वर्कर है, जो टीम उसके अंडर आई है, वो स्पेशलिस्ट टीम है बिकॉज दी स्पेशलिस्ट आर बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स. सो दे आर स्पेशलिस्ट. सो हियर दिस जनरल जो पीएम है, मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, हु इज द कर्ता धर्ता ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मीन्स होल एंड सोल टू द प्रोजेक्ट, और वही सब कुछ डिसाइड कर रहा है व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन एक्सेट्रा. तो वो उनको कमांड कर रहा है जो स्पेशलिस्ट है. सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी प्रॉब्लम विद दिस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कि यहाँ पे जनरलाइजेशन को ज्यादा एम्फेसिस मिला है बिकॉज स्पेशलिस्ट टीम इज वर्किंग अंडर समवन. So this is the problem with this particular project, but this problem can be taken care of. Although this project structure is not a pill of all ills, but whatever problems you find in this structure can be removed by a proper orientation of the team formation and work assignment. If there is proper democratic functioning of the team, if there is proper two-way communication in the team, if the project manager is very much democratic and very much liberal and very much accepted to the team's opinion etc, then वो एक छोटी सी उसकी दिक्कत है उसको पूरा किया जा सकता है. और this project structure is very much suitable for large projects, unique projects etc, where the organization can optimally utilize its available resources and hence result into efficiency and effective and timely completion of the project. So this simple was the project structure. In the next video we'll be taking care of the matrix structure. So if you like this video, please give us a thumbs up,
subscribe to this channel and share the videos with all your friends, whether in MBA, whether doing BBA, MBA, UPSC or commerce or whatsoever. We actually strive to provide the best e-learning for the commerce students in all. So please give us your love and support. And till my next video, stay happy. Bye.